Then they get Okay. Once you're done revising simple present tense, quickly start doing the exercise that you can see on the screen. This is for the revision of articles that we did yesterday, if you guys remember. मेरी आवाज clearly आ रही है, right? Yes, Loud and yes. clear? Yes, yes. Loud and clear, right? Okay. For now, you can just write the answer and the question number, ठीक है? Question number and the answer. पूरा sentence मत लिखो, time जाएगा उसमें. But do it quickly, okay? Uncountables का rule जो हमने कल पढ़ा था वो याद रखना, okay? Sure. Hmm.
Done, guys? Yeah, done. Yes. Okay. Tell me first four quickly, Aishwarya. It was not a good idea to bring the children to the party. Very good. Next. She is looking for an work in London. Sorry, Work is a work in London. कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पर वेयर नेसेसरी बोला गया है। वेयर एवर नेसेसरी वहीं पर यूज करना है। शी इज लुकिंग फॉर वर्क इन लंदन। ओके, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा विथ वर्क। ठीक है, Uh, नेक्स्ट। I have not got much luggage with me, just this bag. आई हैवंट गॉट मच लगेज Much विथ luggage with me, just this bag. मी। ठीक है, नेक्स्ट। I often go to him for an advice. I have not got a I haven't got an experience with computers or एक्सपीरियंस much अनकाउंटेबल, confusion. इट्स अनकाउंटेबल, सो नो आर्टिकल। Oh, ओके, या सौरभ, नेक्स्ट टू। So it's like cook the spaghetti for 8 minutes and then serve it with tomato sauce. हाँ, टोमेटो सॉस इज अनकाउंटेबल, सो कोई Yeah. आर्टिकल नहीं है। ठीक है, Okay. नेक्स्ट। And then uh, there are many words I don't understand, so I'll use the dictionary. द डिक्शनरी और डिक्शनरी यूज करते हैं हम सब। Dictionary. ओके, Yeah, a dictionary. नेक्स्ट। प्रसाद, लास्ट फोर। अदर, सॉरी, अदर्स Yes, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। yes. I will have an omelette with a mushroom, please. मशरूम्स प्लूरल है वो, पहली चीज मतलब। तो Mushrooms, क्या आएगा वहां please. पर? ब्लैंक में क्या The आएगा mushroom. फिर? कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। Mush- आई yes. हैव एन ऑमलेट विथ मशरूम्स प्लीज। हर बार Okay. आर्टिकल नेसेसरी नहीं होता है गाइस, ठीक है, रिमेम्बर दैट। Okay. नेक्स्ट। Peter is very busy this day. He hasn't got he hasn't got a free time. मच फ्री टाइम, अब कैसे आएगा मच फ्री But टाइम? और ही हैज नॉट गॉट फ्री टाइम, एनी फ्री टाइम भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, यूजुअली हम yes. नेगेटिव के साथ में एनी यूज करते हैं, एनी भी यूज कर सकते हैं। एंड दीज डेज है वो, रीड प्रॉपरली प्रसाद। ठीक है, लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन। The bank was crowded. There were too many people. लास्ट वन। Uh, I had an I had onion soup and a bread roti for lunch. रोल, Sorry, रोटी कहाँ no दिखा है? any ब्रेड article रोटी given. होता है क्या प्रसाद? Bread, नहीं, sorry, फर्स्ट bread वाले roll में for lunch. आर्टिकल नहीं Yes. आएगा। हाँ, फर्स्ट वाले में आर्टिकल नहीं है, Uh, सेकंड वाले में आर्टिकल है, अ uh, ब्रेड रोल। yes. ठीक है, बिकॉज वी आर Okay. टॉकिंग अबाउट वन ब्रेड रोल। या Okay. प्रसाद म्यूट कर दो प्लीज। ओके, ओके, नेक्स्ट। वी आर डन विद दिस। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, और कुछ कंफ्यूजन है? ये क्विक रिवीजन था फॉर व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। नो, राइट? Okay, make sure you use them properly, and for So homework you will try to resolve this exercise once more. ठीक है, जो जो mistakes किए थे, make sure you do not make those mistakes. ठीक है, okay. okay, So this moving Susmita, to one the next. we will got. am I audible? Yes, wait a second. Yes, Aishwarya, what were you saying? This study material is It's where there the in the, shared. is there in the module folder Which, that you access. Prasad, please keep yourself on mute. बहुत background noise है आपके यहाँ पर। हाँ, and this is the model 2 which we are currently मॉड्यूल discussing. 2, यस, वी आर स्टिल ऑन मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 हो जाता है, फिर मॉड्यूल 3 का एक्सेस लेना मेरे से। जो चल रहा है वही लो, Where उसके आगे का मत लो, क्योंकि आप ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक हम्म, and एंड where is the answer of this exercises? answer I will be giving you. You won't get it anywhere. So once you solve the exercises, you will share the photos with me. I will also be giving you guys one Google form where you will be
अटैचिंग द पिक्चर्स ऑफ दिस एक्सरसाइजेस जो आपने सॉल्व किया है। नोटबुक के सिर्फ पिक्चर लेके आप उसमें अटैच करके मुझे भेजोगे। आई विल चेक इट एंड देन आई विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट। ठीक है। Okay, आंसर्स sure. कहीं पर भी आपको दिखेंगे नहीं एज सच। ठीक है। Because you have to solve it first, right? If I give you the answers, you will look at the answers and solve them. Yeah, No, it's not. just for verifications after the solving. I will, I will check it. Don't worry. Yeah. Okay. Yes. Sora, what were you asking? Okay, so like, can we go back to the exercise that we were doing? Yes, sure. Please tell Okay, me. so here I'm thinking that we can also accommodate some kind of other words as like I have like for the third one. So I haven't got any luggage with me, just this bag. Hmm. या एनी भी यूज कर सकते हैं। मैंने बोला ना नेगेटिव के साथ में हम यूजुअली एनी यूज करते हैं। ये हम आगे देखेंगे यूनिट 8 में। ठीक है कि एनी मच मैनी हमारे कहाँ पर यूज होते हैं। Yeah, we'll see in unit 5 as well as unit 8 again. ये कब कहाँ कैसे यूज होते हैं। any, much, many ये क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं ना। सो any यूजुअली नेगेटिव्स के साथ में हम यूज करते हैं एंड some पॉजिटिव के साथ में यूज करते हैं हम। I have Okay. got some luggage with me. I haven't got any luggage with me. Yeah. So that's why. So like I have also one concern like in the fifth हाँ, one. So it is cook the spaghetti for 8 minutes, then serve हम्म it with some tomato sauce. some tomato sauce या फिर यूजुअली सम नहीं बोलते। जब रेसिपी कोई बोलता है ना तो सम नहीं बोलते हैं। वी जस्ट से सर्व इट विद टोमेटो सॉस। जिसको जितना लेना है वो उन पे हाँ. डिपेंड करता है। बट वी कैन से सम बट यूजुअली इट्स अ रिटन रेसिपी राइट दैट वी हैव यूजुअली रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑन द पैकेज। सो वो सम नहीं बोलेंगे कभी भी बिकॉज इट डिपेंड्स Okay. ऑन यू हाउ मच यू वांट टू पुट राइट। सो इट्स एन And इंस्ट्रक्शन बेसिकली दैट्स द रीजन। okay. And in the seventh one, so it's like omelette with some mushrooms, please. सम अगेन he is giving an instruction over there ना so that is the reason some odd हो जाएगा वहां पे with Okay. mushrooms। तो कुक को या फिर शेफ को जितना डालना है वो उस पे उसके अकॉर्डिंग वो डालेगा ना। सम बोलेंगे Mhm. हम यूजुअली जब नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस विद फैमिली करते हैं तब वो अलग बात हो जाता है। हियर वी आर लुकिंग एट फॉर्मल सेंटेंसेस सो दैट्स द रीजन वी आर नॉट एडिंग सम ओवर हियर। ऑमलेट विथ मशरूम्स है वो। सो Okay, जैसे हम but बोलते हैं ना to ब्रेड ask, विद बटर राइट। तो वी uh, डोंट से सम बटर वी जस्ट से बटर। अभी it depends on the other person how much he wants to put, right? yes, but Hmm. so it's our choice that like, do we need like some mushrooms or too much mushrooms? Yeah, depends. So then we give instruction. If you want to add on the instruction, we give it in the second sentence. यूजुअली दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। एक तो सबसे पहले मतलब शेफ का जो रेसिपी है खुद कभी भी इंस्ट्रक्शन देके उसको खराब नहीं करना रहता। दिस इज वन थिंग दैट many people do not understand, that is when we go to a restaurant we guide the chef according to our choice, and when the food doesn't turn out good we blame the chef. Okay, so you should not mess with it first thing, but yes, if you want to give instruction you can give it in the next sentence then. I'll have an omelette with some with mushrooms, please keep it on, please add extra mushrooms ऐसा करके हम बोल सकते हैं। Okay, or Uh, yeah, okay, or okay. usually say I don't like tomatoes, so I would say I'll have an omelette with bread, uh please note no tomatoes ऐसे करके I will say, or Of please course, don't add tomatoes ऐसे because I करके really हम don't like tomatoes. या ऐसे करके हम बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट इसमें हम इंस्ट्रक्शन बताएंगे if we want to give any kind of instruction in our order in restaurants. Okay. Uh, okay, sure. Yeah, but usually we should not give any instructions, but ठीक है। Yeah. Okay. Because like Yes, really I sir. don't like tomatoes. So like when I give the order to like McD or some kind of like Mm-hmm. outlets, so I specify there like please no tomatoes. Yeah, over there it's fine, but जब हम बड़े restaurants में जाते हैं, proper restaurants में, when they're where they're going to cook properly, right? Over there it's Uh, important that we don't give such instructions because sometimes we don't understand as a normal person कि वो ingredient वो उस recipe के लिए कितनी crucial हो सकती है।
Right now, if True. I'm saying I don't want tomatoes for my omelette, that's fine. उससे taste इतनी भी change नहीं होगी, right? होती है. Hmm. If you eat non-veg, you will know that tomatoes ना डालने से भी omelette की taste change होती है, right? So वैसे True. ही कभी-कभी कुछ ingredient बहुत necessary होते हैं उस recipe के लिए. And if we say no to that, it could totally change the taste. It's like if I go to the restaurant and say I want to eat butter chicken, but keep it spicy. Butter chicken is not spicy. First thing. Second thing is I go and order chicken kolhapuri and I say you make it mild. Chicken kolhapuri is Uh, not supposed to be mild. It's supposed to be spicy. वैसे instructions बोल रही हूँ मैं समझ रहे हो आप? okay. Understood. Yeah. Like which will Okay. So totally change these the are the taste. etiquettes that you're teaching. Sorry. So these are the etiquettes that you are teaching. Yeah, it's like most That we it's common sense, but yes, it's not part of our course. Okay, guys, ये तुमने पूछा है इसके लिए मैं बता रही हूँ, but yes, it's not part of our course कि ये आपने follow करना चाहिए okay. सर. But you asked, that's why I'm highlighting it कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमने. Yeah, it affects the taste. I have seen people doing it. That is the reason I highlighted. ठीक Mhm. है. Yeah. Yeah. I have people who like when I make something they say that okay don't add this and I'm like if I don't add this thing then how will I make this item? I can't make this item without this ingredient. Okay, so वैसे हो Uh, जाता है. Yeah. true. It's like चाय बनाओ but चाय पत्ती मत डालो आप अगर बोलोगे तो it's like that. Okay. Yeah, if you understand what I'm trying to say. Uh, ठीक है. Yeah, I'm just kidding. ऐसा कोई इतना extreme बोलता नहीं है, but yes, we have some people. Okay, moving to the next part, the important part. Here we have the next conversation. Okay. Now, today we'll be mostly finishing our unit number two, and tomorrow we will be going through some vocabulary which is attached to our unit number two. Okay, so come prepared accordingly, I would say. Now, today we'll try to finish our unit number two with our prepositions of time जो हमने बोला था discuss करेंगे. Now, prepositions of time go hand in hand with our simple present tense because जब भी हम repeated actions हमारे schedule की बात करते हैं तो we use prepositions of time as well. For example, the words like at, on, in, जो हमारे होते हैं, right? Now that's what we are going to see in this part of the conversation. Now over here, I want you guys to read the conversation just like a conversation last time जैसे हमने किया था. I want Saurabh to be the taxi driver and Aishwarya to be Christina. Okay? And you guys have to read the conversation loudly. If you face an issue with any word, ask me for the pronunciation. Okay? Okay, You guys can can I start. start here? Yes, please. Uh, I need to go to National Bank downtown. Please, I'm late for the meeting. For a meeting no problem. What time is your meeting? in 10 minutes. I don't usually work in the morning. Really? What time do you usually go to work? I work in the afternoon. I start at 1. That's pretty late. Do you like to go to work in the afternoon? Yes, I do. I work better in the afternoon. I finish at 7 or 8. Then I go home and eat dinner at around 10:30. Wow, you have dinner late. I go to bed every night at 8. Really? That seems so early. Very good. Okay. Easy conversation, but some words that we need to know. Downtown, downtown जैसे मैंने last time बोला आप लोगों को, is the main area, right? The main part of the city where everything is located. Yeah, and then opposite उसका होता है suburbs. Then over here, she's requesting the taxi driver, I need to go to National Bank downtown, please. I'm late for a meeting. So, पूछता है, what time is your meeting? So she's saying in 10 minutes, मतलब 10 minutes में. Right? I don't usually work in the morning, so she doesn't know कि okay कितना traffic होता है, कितना time लगता है. Usually afternoon में उतना traffic नहीं होता है, right? So he's asking over here, what time do you usually go to work? Then she's saying, I work in the afternoon. I start at 1. मतलब वो काम कितने बजे start करती है? I start at 1. So but that's pretty late.
एंड वो पूछता है फिर तुम्हें पसंद है क्या काम दोपहर में करना? सो शी सेज यस आई डू, आई वर्क बेटर इन द आफ्टरनून. सो इफ यू guys know, we all have different ways of working, right? We all have productive hours. If you guys know, some people are productive in the morning, some people are productive in the afternoon, some people are productive in the evening, right? Now unfortunately we do not have the liberty of choosing our shifts according to our productive hours, but at least I would say you can allot your most tedious tasks and most easy tasks, or कैसे बोलूं मैं अभी, कि जो आप इंजॉय करोगे या फिर जहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है वैसे टास्क आपके प्रोडक्टिव आवर्स में रखने का ट्राई करो. ठीक है, दैट्स व्हाट आई यूजुअली से. विल लुक एट दैट आल्सो, डोंट वरी, वन डे. देन Mhm. here she says, I work better in the afternoon. I finish at 7 or 8. Then I go home and eat dinner at 10:30. Prasad, mute yourself and headphones use karo, please. Earphones, headphones should be here. Yeah. We know by now that you get your tiffin or food at this time. Okay. So इतने बजे बेल बजती है वो हम लोगों को अभी तक पता हो गई है सर. So please mute yourself. ठीक है. Okay, next you have dinner late. वो बोलता है yes, she says I go to you have dinner late. वो अपना बताता है फिर कि I go to bed every night at 8. मतलब वो 8 o'clock को सो भी जाता है. 8 o'clock को तो हमारा क्लास स्टार्ट भी नहीं होता, हम 9 o'clock को क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग रियली दैट सीम्स सो अर्ली, मतलब वो बहुत जल्दी साउंड करता है उसके लिए. सो नाउ over here we are going to quickly listen to this conversation. I want you guys to pay attention to the prepositions in and जो हमारे यहाँ पर यूज किए गए हैं, कैसे यूज किए गए हैं with simple present tense. Pay attention to that. Okay, I'll play the conversation. Exercise 7. Conversation. I work in the afternoon. Part A. Listen and practice. I need to go to National Bank downtown, please. I'm late for a meeting. No problem. What time is your meeting? In 10 minutes. I don't usually work in the morning. Really? What time do you usually go to work? I work in the afternoon. I start at 1. That's pretty late. Do you like to work in the afternoon? Yes, I do. I work better in the afternoon. I finish at 7 or 8, then I go home and eat dinner at around 10:30. Wow, you have dinner late. I go to bed every night at 8 o'clock. Really? That seems so early. Okay, easy. Okay, Yes. now we are going to listen to the second part of the conversation. Here, you will pay attention to what time does the taxi driver start work and what time does he finish. वो कितने बजे start करता है उसका काम and कितने बजे finish करता है. He said already that he goes to bed every night at 8. मतलब of course he starts early, right? So pay attention to the answer. Okay, ready? Yep. I'll play it. Page 11. Exercise 7. Part B. Listen to the rest of the conversation. What time does the taxi driver start work? What time does he finish? If you go to sleep at 8, what time do you wake up? Pretty early. I start work at 4 in the morning. 4 in the morning? Wow. What's your typical day like? Well, I get up at 3 a.m. Then I drive from 4 in the morning until 2 in the afternoon. That's a long day. Yes, but I like it. I talk to people from all over the world and see many beautiful parts of the city. That's nice. I only see the National Bank. Okay. Yeah. One second. What time does the taxi driver start work and what time does he finish? So the taxi driver wakes up at 3 a.m. and he starts working at 4 a.m. and he works Starts till work. Starts working means starts work. Work यहाँ पर हमारा noun yeah. है. So he starts work at 4 a.m. and then he works till 2 p.m.
Okay. 2 p.m. Yeah, 2 p.m. or 2 in the afternoon. We can say both the things. that's, Okay. yeah, to be after, yeah. Huh. 4 in the morning. He starts work at 4 in the morning and he finishes at 2 in the afternoon. Everyone got the answer? Yep. Yes. Any confusion, any doubt over here? नहीं ना affirmative No. part जो समझा नहीं काफी easy था, right? Okay. As I said over here, yeah, you had a question, Aishwarya? No, no. No, no. Okay. As I said, here we are going to see prepositions of time. They are also called time expressions. Okay. Prepositions of time. What are prepositions? We will first understand that. Prepositions are the words which we use to relate one part of the sentence to another part of the sentence. For example, right now, if I say the laptop, the phone, does it make sense? No. No. But if I say the laptop is next to the phone or the phone is next to the laptop, it makes sense, right? It relates one part of the sentence to another part of the sentence, as I said. Now, mainly we have three prepositions of time. Okay, preposition, sorry, three prepositions, three types of prepositions. Preposition of time, preposition of direction and prepositions of position. जो मैंने use किया, it's prepositions of position. ठीक है, अभी हम mainly देखेंगे prepositions of time, जो कि हमारे simple present tense के हम साथ जाते हैं and वो हमारे लिए important है because as we talk about routine or our habitual actions, we use them in our conversations. ठीक है, अभी first हमारा आ जाता है the word at. Okay, the word at, which is given on the screen. When do we use the word at? When we want to For talk about? specific timing or specific Yes. place. अभी टाइम के लिए सिर्फ हम देख रहे हैं, अभी हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, हम सिर्फ टाइम के लिए हम रेफर करेंगे, प्लेस का हम बाद पे देखेंगे, ठीक है, इन यूनिट 8. Yeah. So as I said, here we use at to talk about exact time. For example, our class starts at 9 p.m. Correct? So we are talking about an exact time. Yeah. Then we have the word early. अर्ली मतलब जल्दी, हमें पता है, राइट? आई लीव वर्क अर्ली. देन आता है हमारा वर्ड अराउंड. व्हेन डू वी यूज द वर्ड अराउंड? जब हमें बोलना है कि उस टाइम के Yes, आसपास. madam. अभी एग्जांपल इन फॉर्मल सेटिंग्स वी स्टार्ट एट एन एग्जैक्ट टाइम, राइट? बट व्हेन वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स for say lunch or dinner or for brunch or for any task, we will say let us meet around 7, correct? Or let us meet around 9. So when we don't have to follow exact time, we use the word around. ठीक है, फिर आ जाता है लेट. लेट इज द अपोजिट ऑफ अर्ली. टाइम के बाद अगर हम कोई चीज करें तो वो लेट हो जाता है. अभी नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज until. Okay, when do we use the word until? I stay up until midnight. What do we mean by until? Until मतलब उस टाइम तक. ठीक है, so when I'm saying I stay up until midnight मतलब मैं 12 बजे तक जगती हूँ. What do we mean by midnight? Midnight मतलब क्या? मिड 12 बजे ही होता है रात को. Yeah, it's an 12 to exact 4. time. No, it is an 12 exact to time. 4. Midnight is an exact time. Okay, that is रात के 12 बजे. So if I say I called him for his birthday at midnight, so इसके सब पे at use होगा again because we are referring to exact time which is 12 a.m. रात के 12 बजे. ठीक है, and if I say noon, again noon is an exact time. Only the word noon. ठीक है, noon is an exact time which is दोपहर के 12 बजे. Yeah, so if I say call me at noon, that means दोपहर के 12 बजे मुझे कॉल करो. Yeah, and afternoon is, that is the reason it's called afternoon, मतलब 12 बजे के बाद. ठीक है, now as I said, until मतलब उस टाइम तक. ओके, मराठी में हम बोलते हैं तोपर्यंत, 12 वाजेपर्यंत आपण म्हणतो ना, like that. ठीक है, so that word is until in English. Remember this because we get confused with this. Then आ जाता है before and after. Before मतलब दिए हुए टाइम के पहले, after मतलब दिए हुए टाइम के बाद. ओके, अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारा द वर्ड इन. इन हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ डेज. ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. बट नाइट के साथ में हम यूज करेंगे एट. वी से एट नाइट. ठीक है, फिर आ जाता है इन. हम
अगेन यूज करते हैं विथ मंथ्स एंड ईयर्स एज वेल। मंथ्स एंड ईयर्स के साथ में भी हम इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल से इन द मंथ ऑफ मार्च, इन मे, इन जून। ठीक है, सेम वे आई विल ऑल्सो से इन 2008, इन 2020, इन 2021। सो ईयर्स के साथ में भी हम इन यूज करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा ऑन। ऑन हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट डेज, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। सेम वे आ जाता है ऑन वीकडेज, ऑन वीकेंड्स। वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे। ठीक है, एंड वीक नाइट्स भी होते हैं। वीक नाइट्स इज अगेन आर मंडे टू फ्राइडे जो हमारे होते हैं, बट इवनिंग्स को सिर्फ हम रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑन वीक नाइट्स बोलेंगे। क्लियर? अभी नेक्स्ट हमारे जो प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आ जाते हैं हमारे, एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन इट। आ जाता है हमारा फॉर एंड सिंस। यू guys can see the screen, right? It's not very small. दिख रहा है ना? टिल पे होता है ओके, ना? हाँ, वी आर कमिंग टू दैट। पहले फॉर एंड सिंस ओके। से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फॉर एंड सिंस जो हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं या फिर इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और यूजुअली गलत ही यूज करते हैं। दैट्स द मेन थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट। नाउ सिंस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड। ओके, व्हेन द एक्शन स्टार्टेड। For example, I will say, I have been in back-to-back sessions since 6 p.m. I have been in back-to-back sessions since 6 p.m. तो मैं ये बोल रही हूँ कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ, राइट? एक्शन स्टार्ट कब हुआ ये बोलने के लिए आई विल यूज सिंस। Whereas, if I want to highlight for how much duration I have been doing that action, so I will say, I have been speaking continuously for 4 hours. I have been speaking continuously for 4 hours now. और I have been in back-to-back sessions for 4 hours. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्यूरेशन हाईलाइट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि कब वो एक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये फॉर जो है वो सारे टेंसेस के साथ में यूज होता है। सिंस यूज होता है ओनली व्हेन द एक्शन इज स्टिल ऑनगोइंग। अब ये कौन से टेंसेस के साथ में यूज होता है अगेन हम आगे देखेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज एज ऑफ नाउ। यूनिट 10 में हम फिर से फॉर एंड सिंस देखेंगे। ठीक है, बट इट्स क्रूशियल, दैट्स व्हाई आई एम टचिंग अपॉन इट ओवर हियर राइट नाउ। ठीक है, फॉर इज फॉर ड्यूरेशन, इट्स यूज विद ऑल द टेंसेस, बट सिंस का रूल है कि स्टार्ट टाइम हम यूज करेंगे और वो एक्शन अभी भी ऑनगोइंग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रूल। दूसरा आ जाता है हमारा फ्रॉम एंड टू या फिर टिल। ठीक है, सो आर क्लासेस फ्रॉम 9 o'clock टू 10 p.m. और टिल 10 p.m. दोनों भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ओके। फ्रॉम एंड टू एंड फ्रॉम एंड टिल साथ में जाते हैं। अगर हम बोल रहे कि एक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसको एंड भी करना पड़ेगा हमें फ्रॉम के साथ में। ठीक है, दैट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। देन आ जाता है हमारा इन एंड विद इन, जो अभी हमने कॉन्वर्जेशन में देखा था, राइट? इन 10 minutes एंड विद इन 10 minutes। ओके, इन हो जाता है, दे हैव सिमिलर मीनिंग्स, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट ये बताने के लिए कि इन 10 minutes मतलब क्या, 10 minutes के एंड में। ठीक है, बट मैं अगर बोल रही हूँ विद इन 10 minutes मतलब 10 minutes के पहले भी हो सकता है वो चीज। सो इफ आई से आई विल बी बैक विद इन अ वीक, मतलब मैं वीक खत्म होने के पहले आ जाऊंगी। ओके, बट इफ आई से आई विल बी बैक इन अ वीक, दैट मीन्स आई विल बी बैक टिल द एंड ऑफ द वीक, मतलब एक वीक जब खत्म होने आएगा तब। यही छोटा सा डिफरेंस है, बट अगेन they can be used interchangeably. You know this rule, not everyone knows this rule, right? So we can use them interchangeably. ठीक है, बट यूजुअली इफ यू वांट टू साउंड ग्रामेटिकली करेक्ट, मैंने जैसे रूल बताया वैसे उसको यूज करो। फिर आ जाता है हमारा द वर्ड बाय। बाय, द क्लास विल एंड बाय 10 p.m. ओके, तो हम यहाँ पर क्या हाईलाइट कर रहे हैं
कि what is the maximum time that the action will go on for. ठीक है, तो as I said, our class will end by 10 p.m. So 10 p.m. is the max time it will go on till, right? These words become very, very important and crucial for us while using or talking about time. ठीक है, क्लियर? Yes. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, खुद के वर्ड्स में क्विकली लिख के निकालो। ये जो लास्ट के नीचे लिखे हुए वो ऊपर वाले के लिए मैंने नोट्स नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किए हुए हैं। Hello, ma'am. यस, What do we say for today, yesterday, and tomorrow? Means, तो क्या लगाना है उसके आगे? गिव मी एन एग्जांपल। I will work. I will work on tomorrow. I will आई विल complete it वर्क ऑन on today. टुमारो। यहाँ पर इसके साथ में ऐसे कोई वर्ड्स नहीं आते हैं, इफ वी सी, राइट। आई विल कंप्लीट दिस टुमारो, तो कोई भी प्रपोजिशन ऐसे सच That नहीं आ रहा है उसके साथ में। आई विल कंप्लीट दिस नहीं, टुमारो, ऑन टुमारो नहीं on लगाने की बोलेंगे, जरूरत इन नहीं. टुमारो नहीं, ऑन टुमारो इन टुमारो कुछ भी नहीं आएगा। बाय टुमारो बोल सकते हैं, Directly बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम by टाइम tomorrow. द एक्शन विल गो ऑन, राइट। आई विल कंप्लीट दिस बाय टुमारो, वो हम Yes. बोल सकते हैं बट नेसेसरी नहीं है। आई विल कंप्लीट दिस टुमारो Okay. भी हम बोल सकते हैं। Okay. हाँ, अगर कोई पूछ रहा है कि कब तक सबमिट करोगे, तब आप बोलोगे आई विल कंप्लीट, आई विल सबमिट इट बाय टुमारो। Yes. Yes. ओके, For और यू date. कैन गिव टाइम आल्सो, Yes. ऑन आ जाएगा डेट के साथ में। हाँ, डेट लेट के लिए अस होना मीट ऑन चाहिए. 15th। हाँ, लेट अस मीट ऑन 15th। या और कोई वर्ड के Okay. साथ में कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. नो, राइट? ओके, moving to the next part over here that we have, that is expressing our clock time. Now, expressing our clock time is easy, but एक crucial role for advanced English यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला तो आ जाता है हमारा 7 AM 7 PM। हमें पता है कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक इज AM, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इज PM season, right? Either we can say 7 AM or we will say in the morning. We will not say 7 AM in the morning. ठीक है, दोनों भी necessary नहीं है। Either say AM or PM और से इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। ठीक है, फिर ओ क्लॉक, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ओ क्लॉक, ये हमारा यूज होता है ओनली विथ राउंड टाइम। वी विल से 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock। आई विल नॉट से 7:15 o'clock 7:30 o'clock, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस पार्ट विच इज द इजी पार्ट। अभी नेक्स्ट विच Yes. इज इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा आ जाता है, जो कि है हम यूज करते हैं Quarter to 7, Quarter past 7, Quarter to 7 or Quarter past 7. What do we mean by that? Who will tell me? For example, right now, exact time जो है, it's Quarter to 10. Exact time. Quarter to 10. 15 Write it minutes down. remaining for the time. Quarter, 1 minute. Quarter to. What do we mean by that? Quarter to 10. Why are we calling it Quarter to 10 and not saying 9:45 p.m.? Different way of saying the same thing. हमें एकदम पॉलिश्ड इंग्लिश में साउंड करना होता है ना, एडवांस इंग्लिश में साउंड करने के लिए वी कैन से Quarter to 10. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आई यूजुअली गिव लॉट ऑफ एनालॉजीज ऑफ पिज्जा, सो बेयर विथ मी अगर भूख लगी होगी तो, मुझे लगी है बट फिर भी। इमेजिन अ पिज्जा, ओके। नाउ व्हेन यू गो एंड गेट अ पिज्जा व्हिच इज अ रेगुलर साइज पर्सनल पिज्जा जो हम बोलते हैं, राइट, उसमें कितने स्लाइसेस आते हैं? 4. 4. 4 स्लाइसेस आते हैं, राइट। नाउ हमारा क्लॉक भी पिज्जा जैसे होता है राउंड, करेक्ट? Yeah. So that one slice of pizza is your 1 quarter. Okay. And that 1 quarter equals 15 minutes. Right? हम क्वार्टर्स सीखते थे ना स्कूल में भी, फिर में 4th स्टैंडर्ड में होता था हमारे, राइट। 1 quarter 1/3 1/4 जो हम बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारा पिज्जा जो है विच इज
in a shape of a clock is divided into 4 slices. Correct? So divide your clock also into 4 parts. Okay? When you divide it into 4 parts, that one part is of 15 minutes, which looks like your पिज्जा का स्लाइस. ठीक है. अभी ये जो 15 मिनट्स का वन पार्ट है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम यहाँ पर जब हम Q2 10 एंड Q10 बोल रहे हैं तो हमारे 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. कौन से? टू एंड पास्ट. बिकॉज दीज वर्ड्स हाईलाइट कि टाइम होने को आया है कि होके गया है. ओके. पास्ट मतलब होके गया है, उतना टाइम गुजर गया है. ओके. बट व्हेन आई से टू मतलब होने को बाकी है. राइट. दैट इज द रीजन आई हाईलाइटेड राइट नाउ इट्स Q2 10. मतलब एक क्वार्टर बाकी है 10 o'clock होने के लिए. बट एट 10:15 आई विल से इट्स Q10. Q10. That is equals to 10:15. ठीक है. So Q2 10, which is right now, it's 9:45 p.m. Clear? So यहाँ पर टू Yeah. एंड पास्ट ये दोनों वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. अभी बहुत लोग मिनट्स के साथ में भी इसको ब्रेक डाउन करते हैं, बट वी डोंट नीड टू डू दैट. इट्स 10 to 10 भी बोलते हैं. इट्स 10 to 10 मतलब अभी अगर आप एग्जैक्ट टाइम देखोगे इट्स 12 to 10 मतलब 12 मिनट्स बाकी है 10 o'clock होने के लिए. एट 9:50 आई विल से इट्स 10 to 10 मतलब 10 o'clock 10 मिनट्स बाकी है 10 o'clock होने के लिए. Right? Now, when you're speaking, you don't need to complicate it by using the stuff because not everyone understands this time. Okay? But if someone in your surrounding or in your team talks in such a manner, you should know how to refer to time. Because ऐसा नहीं हो कि वो person बोले Q2 10 and you reach for the meeting at 10:15. ठीक है. ये गलती मेरे सामने एक फ्रेंड ने की हुई है, मेरे एक कलीग ने की हुई है. दैट इज द रीजन आई एम हाईलाइटिंग दिस पार्ट. ठीक है. इट्स रियल लाइफ एग्जांपल, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अगेन इट्स नॉट इन द सिलेबस बट आई कवर इट इन माय क्लास बिकॉज दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू. ओके. Some people who want to sound very fluent in English, they happen to use terms like Q2 10, Q past 10, and sometimes we don't understand and we happen to interpret it in a wrong way and हम गलत टाइम पे मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं. ठीक है. सो पे अटेंशन टू पास्ट एंड टू. अगर कंफ्यूजन है, आस्क. if someone is speaking by if someone is saying let's meet at Q2 10, do you mean 9:45? कंफर्म कर लो, कोई इश्यू नहीं है. if you ask for clarification, nobody is going to highlight it or say that okay you made a mistake or you did not understand. It's better to ask and clarify. ठीक है. समझा ये पार्ट की कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है इसमें? So, Yes, no? yes, Okay, write it in your own words quickly, as I said. Q2 मतलब उतना एक क्वार्टर बाकी है. क्वार्टर पास्ट मतलब होके गया. सो पास्ट मतलब होके गया, ये याद रखो. मैडम हाफ के लिए क्या होता है? मतलब 10:30. 10:30. इट्स हाफ पास्ट 10 भी बोलते हैं. इट्स हाफ पास्ट 10 ये भी बोलते हैं, बट 10:30 इज बेटर टू से. 20 past 10, 10:20 के लिए ऐसे भी बोलते हैं. Right? But I usually say don't complicate stuff, keep it easy. Say 10:20, say 10:30. It's better. अब मैडम एक क्वार्टर है, हाफ है, और जो मिनट बाकी उसको डायरेक्ट मिनट बोल सकते हैं क्या? मिनट मतलब क्वार्टर हाफ नहीं है, क्वार्टर 1/4 है. नहीं 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 20 मिनट पास्ट हम्म 10, 30 हम्म 25 मिनट पास्ट 10 ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, बट एज आई सेड ना कि इजी रखो. 10:20 बोलो, इजी है. यस. राइट. डोंट कॉम्प्लिकेट बिकॉज वी अंडरस्टैंड. अभी मैंने सिखाया है इसके लिए यू माइट अंडरस्टैंड, बट इसके पहले हमें भी डिफिकल्ट होता था ना अंडरस्टैंड करने के लिए.
right? So we don't want to Yes, do the yes, same yes. to others who might not know how to interpret it. Or even if you use, make sure you use normal time also after that. Is it clear? Yes. Okay, one second. Write this down as well quickly. Done. Done? Yes. Prasad, Saurabh, what about you guys? Yes, yes. Yes, ma'am. Done? Okay. Now we will do this exercise. We'll quickly finish our listening exercise and we'll come back and do that exercise. Okay? Just 1 minute. Okay. Here we have a listening exercise. Here we have three people who are talking. That is Aaron, Madison, and Kayla. Okay, they're talking about their daily schedules. I want you to listen to the conversation. I want you to write down the job, what time they get up, what time they get home, and what time they go to bed. Okay, you will just write down the timings. But when you're going to tell me the answers, of course, you'll tell me the answers in full sentence in third person singular. Okay, tell me once you're ready. I'll play the conversation. Do you guys have an access to printers in your office? No, No? no. Sad. तो you will have to make notes yeah, in class. अगर no, printer होता ऑफिस में तो मैं बोलती प्रिंट आउट निकाल लो आप इजी हो जाता है आप लोगों के लिए in class as well as when we are doing Yes. WB exercises हमारे workbook exercises but if you go to take out a printout like बाहर से अगर आप प्रिंट आउट निकालने जाओगे it will go very costly अभी प्रिंट आउट के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं हर जगह पे and Hmm. बहुत वर्कशीट्स है अपने तो उतने आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो पॉसिबल नहीं होगा बट इफ यू वांट टू यू कैन ऑफ कोर्स ओके आई प्ले द कन्वर्सेशन पे अटेंशन वन सेकंड अगर Page 12.
Exercise 10. Listening. What hours do you work? Part A. Listen to Aaron, Madison, and Kayla talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Aaron? I'm a carpenter. Oh, yeah? So what hours do you work? I work 8 hours a day from Monday to Friday. I get up around 6 a.m. and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Madison? Well, I'm an accountant. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Kayla? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 at night. I work until 7 a.m. Wow! So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30, and I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Okay. Could you all please play the Kailash part again? Okay, sure. I'm going to play the conversation again. You also have to note down who do you think has the best daily schedule and why. ठीक है? Okay. So I'll play the part again. If कोई information miss होगी तो वो लिख लो and plus try to answer the last question as well. ठीक है? Page 12. Exercise 10. Listening. What hours do you work? Part A. Listen to Aaron, Madison, and Kayla talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Aaron? I'm a carpenter. Oh, yeah? So what hours do you work? I work 8 hours a day from Monday to Friday. I get up around 6 a.m. and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Madison? Well, I'm an accountant. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Kayla? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 at night. I work until 7 a.m. Wow! So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30, and I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Did you get the answer? Did you get all the information? Yes, no. Yes. Okay. Prasad, Saurabh. Uh, Kailash part was confusing, but Yes, it is supposed to be I confusing. think that like wake up time gets not mentioned in the Kailash part. Someone has background noise. Please mute yourselves, guys. Others. mm, Yeah, sorry. Please repeat, Saurabh. Okay, so Kailash part was confusing. Okay, Mm-hmm. but I think that in the Kailash part, so wake up time and get home time is not mentioned. Okay. Others, did guys get the answers? I'll put the script in the group. Just give me 1 minute, guys. Okay. Others, Aishwarya, Prasad, आप लोगों को आंसर्स मिले कि नहीं मिले? Yes, I am. I am also confusing in Thailand. Kayla's part.
Same. Okay, And what iron about? and medicine is okay for Hmm. एक मिनट रुको. iron इसका and medicine is okay. iron and medicine is easiest, yeah. Yeah, just Yes. give me 1 minute, ठीक है. Dialogues Okay, bit iron and confusing. medicine का बता दो. Aishwarya, tell me for iron. Aaron is a carpenter. He Mm-hmm. works 8 hours a day. In day, Okay. he get up in 6 a.m. and he At. start to work He gets up at at 6 a.m. he gets up at 6 a.m. Hmm. 6 a.m. He starts work at 7 till the 3 Huh. 3 at noon, and he get home back at 4 p.m. and he go to bed at Goes 10. goes to bed. Goes to bed. सामने दिया है ना वैसे ही read करना है. He goes to bed at. He goes to bed at 10 p.m. Okay. Saurabh, do you want to try for medicine? Yeah, sure. So I will just fill in the blanks. So medicine Is an accountant. yeah, medicine is an account, and he works up at 7 a.m. Gets She home gets up at at 7 a.m. uh, he gets Hmm. at 7 a.m. and Hmm. he goes to sorry gets home at 6 p.m. and Hmm. he's the late night bird, and he goes to bed at midnight. Okay. Night owls होते हैं and early morning bird होता है. ठीक है. Night owl. Okay. Yeah, she's a night owl, Okay. we can say. But night owl वो होता है कि जो रात भर जगता है. ठीक है. Hmm. Uh-huh. Yeah. Okay, नाइट आउल, बट उसको क्या बोलेंगे जो कि नाइट में एक्सप्लोर करता है, और उसको Night owl. नाइट बर्ड, नाइट Night owl ही बोलते हैं. Night नाइट owl. आउल. Hmm. ओके ओके, ठीक है. Okay. Last one. मैंने answers just भेजे हैं. Uh, She is a nurse, so she gets up at 4 p.m. She works in night shifts. Okay, so she gets up at 4 p.m. and she gets home at 8 a.m. and she goes to bed at 8:30 a.m. So she works in night shifts. उसके जो hours है वो odd hours है. ठीक है? ओके. That is the reason you guys got confused. Understood? यस. इसलिए मैंने 2 बार प्ले भी किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए. दैट्स फाइन. या मेक श्योर होमवर्क के लिए आप और एक बार वो कॉन्वर्जेशन सुन रहे हो. या क्लियर? नाउ लेट्स फिनिश द एक्सरसाइज क्विकली. टुमारो वी विल बी डूइंग speaking practice. After doing our vocabulary practice, we will be doing speaking practice on the basis of our prepositions that we just studied. ठीक है? Finish श्योर. this exercise quickly. Or do you want to do it for homework? Take a screenshot, do it for homework. Okay, Ashwini, take a screenshot. Do this exercise for homework. We will discuss it in tomorrow's session. Okay. Any questions, guys? Any doubts? Revision कर रहे हो? I hope so. If not, please do regular revision so that you guys don't get confused. ठीक है?